Up. I don't know why. Okay, we are live now. Good afternoon, everyone, and welcome back in today's webinar. And very happy to see you all in today's session. And in our previous session, we have understanding about SWOT analysis and how you conduct for your growth. Let's welcome today's speaker, Mr. Simran Suri, for today's session. And today's webinar organized by Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. And we have today's session on what's and why of a startup scaling. So, on behalf of Jabalpur Incubation Center, we welcome you, Simran ji, for today's session. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you for having me here. Okay, so let me quickly introduce our today's speaker, Simran Suri. She is a founder and CEO at Kanegi, and she is also a TEDx speaker. Kanegi is basically practice the mindful tools and provide a portable spaces for meditation, which empower individuals to connect deeply with themselves. Simran also got featured as Leader of Tomorrow in a leading business newspaper and receiving the prestigious CEO in 20 Young Entrepreneur Award. She also nominated for the Nari Shakti Award in 2017 for her innovative contribution in women empowerment. And we really thank for you, ma'am, for today's session. And we really want to understand more about how a startup can scale their enterprise and what are the different best practices which a startup need to introduce during their scale up phase. Now I request you kindly start. Thank you so much for such a warm welcome and introduction. So let me just begin with telling why I've got those awards and why I've got those recognitions. We'll start the presentation, and along with that, I'll also introduce myself. So, my name is Simran Suri. I am an entrepreneur, a market specialist. Actually, I have been studying marketing since the age of 15. I love marketing, and I wanted to do something for environment. I wanted to do something for people. So I started to experiment with a lot of things. I joined a lot of NGOs, by which I realized that there is a big market gap in providing hygienic chai. So my first startup was into chai. So we used to deliver chai to your footstep, doorstep. This was in 2018. My first startup was called Go for Chai. So it was chai for corporates, chai for online deliveries. This is when the tea market was actually blowing up. We were one of the first ones in the market. This was this was like totally run by women. It was me and another co-founder who was a female, and 75% of our workforce were women. So as you can see, we all for women empowerment, and that's how it began. Right after that, I was just 21, so we decided we want to scale it up more further. Um, so we took it to the airports, we took it to different corporates like TCS, Tech Mahindra, Infoseps, Inox was a big client for us. We used to set up kiosks inside offices. So the scaling up went really well, that we sold about 2 crore to 3 crore teacups in the span of 6 months. So that was quite a big deal for a 21-year-old. And I'll tell you how it happened later, but right now this is my introduction. And soon after that, I went to study abroad. I did my master's in marketing and technology in Goldsmiths University of London. There I worked on multiple startups. Again, the whole scaling up part has never left me, because there I was helping another startup to scale up. It was a SaaS startup, so it was more into tech. So that's what I did, and COVID hit, so then I had to come back to India. Right after that, I was actually working in a job, and again trying to scale up a different company. But I wanted to do something of my own, because एक बार जब आपको कीड़ा लग जाता है entrepreneurship का, so आप
आप नहीं छोड़ सकते. So third time I took the leap of faith, and I was like, okay, now I want to do something which is more on the spiritual side, because I myself have been meditating for long and I've seen the effects in my life. I believe in energy. I believe in the power of energy, that if you think positively for someone or for somebody, positive comes back to you, and it boomerangs. So my concept basically for Kanegi is basically creating spaces inside offices so that you can meditate. We are using VR, virtual reality, in order to create different elements around you inside the pod. So basically, a meditation pod, a Zen pod, which we call it, our product, our main product, is a structure in the form of lotus. It's made up of PU material, and it fits in a very very small office as well. It takes up very less space. You can get inside it and you can just feel the calm by meditating using different audios that we have already arranged. And we also have virtual reality elements to it, where you just wear the headset and you go into a different world. So we have VR walks, we have VR sound baths, we have therapies, and all of that inside the pod. It is single use product, so in an office, everyone can use one by one whenever they get time. So that's about Kanegi, and Kanegi means the soul within you. So we're still scaling up the startup, and we are in that phase. So I think this is the right time to, tell about whatever that I'm doing. And also, we are incubated at IM Bangalore, so they're quite helping us out with the scaling up part. So let's begin with the presentation. Yeah, that's really a very unique concept you are doing with the meditation pods and other thing. That's a very unique thing. Okay, so we can proceed with this. Yeah. Okay. So scaling up a startup. What is scaling up exactly? I mean, you have an idea. You have a brilliant idea. आपने सब कुछ उसके बारे में पता कर लिया. The market you have studied. You have really understood what is the core of your product. It is solving. It is solving a very big problem. You know that, because that's how ideas are built. You are going to solve a problem, and that's why you come up with a startup. Now, but what exactly happens after that? You have an idea, and okay, I'm gonna shift to Hindi. ठीक है, मैं हिंदी में shift कर लेती हूँ. I think that will be much easier also. हमारे पास एक आइडिया आ गया. हमने सोचा, चलो भाई, हम तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे. अब लेकिन बात ये होती है कि आप जब मार्केट स्टडी कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि ओके, इतने कस्टमर्स तो मुझे मिलने ही वाले हैं 100%. बट आपको ये नहीं पता होता कि आप उन कस्टमर्स तक पहुंचोगे कैसे. सो वो जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं स्केलिंग अप. नाउ स्केलिंग अप का इम्पोर्टेंस और स्केलिंग अप के चैलेंजेस हम इसके बारे में बात करेंगे. बट ये जो फेज है ना, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. ये स्टार्टिंग में नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप रिसर्च कर रहे हो. स्टार्टिंग में आप आपके आपके प्रॉब्ली टीम मेंबर्स ढूंढ रहे हो. आप अपना टेक्नोलॉजी सेट कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो. दैट इज नॉट स्केलिंग अप. स्केलिंग अप कम्स व्हेन आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप अपने मार्केट में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट. मतलब कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता बोल के कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है. सो दैट्स व्हेन यू एंटर द मार्केट, एंड दैट्स कॉल्ड स्केलिंग अप. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग अप. अब उसमें स्केलिंग अप बहुत सारे अप्रोचेस से हम ले सकते हैं. मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं कि हमको कैसे स्केल अप करना है. कोई कोई लोग मार्केट एक्सपेंशन और डाइवर्जन के बारे में सोचते हैं, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. अब हाउ डू यू गो अबाउट दैट? We'll go to the next slide. Can we go to the next slide? Yeah. Why scaling up is important? तो ग्रोथ पोटेंशियल जो होता है कि आपको पता लग जाता है अभी मेरा प्रोडक्ट रेडी है, तो उसका उसमें मुझे इनकम कितनी आ सकती है, अभी उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है. बट अगर मार्केट वैल्यू है भी, तो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं क्या दे रही हूँ जिसके वजह से शायद उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल जाए. सो दैट एक्सपेंशन एंड दैट पोटेंशियल आपको रियलाइज करना होगा. दैट विल कम बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट अगेन.
सो फिर से आप अपने व्हाइट बोर्ड पे जाओगे, फिर रियलाइज करोगे, अच्छा नाउ दिस इज माय मार्केट, अब इसमें मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है. सो राइट नाउ फॉर माय स्टार्टअप, it's a very very different product. I cannot just go anywhere and sell my product, because मेडिटेशन करने वाले लोग मुझे फैक्ट्री में नहीं मिलने वाले. करेक्ट. मुझे मेडिटेशन करने वाले लोग लेट्स से कोई एक ब्यूटी सलोन में नहीं मिलने वाले. सो देयर इज अ वेरी स्मॉल टारगेट ऑडियंस, अ नीश. तो आपके प्रोडक्ट का आपको वो एक नीश पता करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ you'll understand, okay, this is this is my target audience. So that's how you'll understand your growth potential. आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा ग्रोथ इस टाइम में इतना हो सकता है, इस टाइम में इतना हो सकता है. एंड that's why scaling up is very very important. Now let's talk about competitive advantage. Scaling up helps startup stay one step ahead. मतलब अगर आप स्केलिंग अप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप पैसे कमाने का नहीं सोच रहे हैं. Because scaling up is basically trying to get income, trying to generate income. It's just a fancy word for saying that I want to earn money. Now there is operational efficiency that comes into place, and market share. अब इसमें इसका मतलब ये है कि अ, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे हम क्या बेटर कर सकते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलिंग अप के लिए. बिकॉज इफ यू डू दैट, दैट विल जनरेट इनकम. डेफिनेटली आपका एक अलग प्रोडक्ट बन जाएगा इन द मार्केट. सो फॉर मी, फॉर Carnegie, you can say that the product is not available yet. There are different products. People might have meditation rooms. बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में, जैसे गूगल के पास मेडिटेशन रूम है ऑलरेडी. बट मैं कुछ अलग प्रोवाइड कर रही हूँ. मैंने इसमें वीआर डाल दिया. अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मैं उसमें अरोमा थेरेपी भी डाल दूँ, कि आप पॉड में जाओ एंड यू कैन जस्ट फील कि बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं. सो एक 5D टच मैं देना चाहती हूँ, जो अभी तक फिलहाल कोई नहीं दे रहा है पूरी दुनिया में. सो दैट्स समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू. मेरा कॉम्पिटिटर अर्बन नैप्स एक कंपनी है. इट्स एन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, बिकॉज उन्होंने स्लीपिंग पॉड्स बनाए फॉर द एयरपोर्ट्स. सो ऐसे सोचना पड़ता है. अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स. नाउ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि स्टार्टअप करेंगे, सबसे पहले हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे, वील टेक द आइडिया, एंड देन उसको पसंद आ जाएगा आइडिया और वो इन्वेस्ट कर लेगा. बट दैट्स नॉट हाउ इट्स डन. वो गलत बात है. क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से आइडिया के ऊपर, या आपका प्रोडक्ट भी बन गया, उसके ऊपर इन्वेस्टर अगर आ भी रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, because he is going to take up most of the chunk of your startup. So please stop thinking कि आपको इन्वेस्टर अभी चाहिए. स्टॉप थिंकिंग. अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, स्टॉप थिंकिंग दैट यू नीड एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड. अगर आपका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग इज ओनली हाई, then that's a different topic. But more importantly, try to get investment from your own friends and family. So there's a concept called as crowdfunding. Try and see if you can crowdfund. Try and see if you can approach your friends and family for, जैसे आपको अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए 1-2 लाख रुपए लग रहे हैं, 3 लाख रुपए लग रहे हैं, आप यहाँ से इकट्ठा करो, यहाँ से कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स ज्वाइन कर लो, कुछ स्टार्टअप फंड्स से ले लो, या कुछ ना कुछ ऐसे करके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके वो इन्वेस्टमेंट लो. इन्वेस्टर तब आता है जब आपने स्केल अप करने के प्रोसेस में घुस चुके हो, एंड यू हैव फाउंड योर फर्स्ट 100 customers. So what is first 100 customers? I think we'll go on to the next slide now. But वो जो first okay, there's a question. Scaling up need investment. How early stage startups can do it? Of course, scaling up needs investment. But what I'm trying to say is that before scaling up, this part of understanding your product, आपको जो आपका प्रोडक्ट का जो पूरी रिफाइनिंग करनी है, वो रेडी करके आपके फर्स्ट 100 कस्टमर्स जब आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हो. स्केलिंग अप उसका पार्ट है. स्केलिंग अप, क्योंकि स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए तो इट्स अ वेरी बिग डील ऑफ गेटिंग 100 कस्टमर्स. सो सो या, that's all. Next slide please. Role of technology in scaling up a startup.
ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस। जब हम एक स्टार्टअप में स्केल अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज, विदाउट द फाउंडर, विदाउट द probably the team members, the product should function, the product should sell. So that's automating process. एसओपीज होते हैं। अगर एक एफ एन बी स्टार्टअप है, जैसे मैंने एक एफ एन बी स्टार्टअप किया था, फूड एंड बेवरेज स्टार्टअप, गो फॉर चाय। हमने उसमें क्या किया था, ऐसा कुछ एक पूरा एक मतलब फ्लो बनाया था कि विदाउट द फाउंडर द प्रोडक्ट इज सेलिंग, द प्रोडक्ट इज स्केलेबल। ये होता है स्केलिंग अप। विदाउट मी मेरे ऑपरेशंस चलने चाहिए। विदाउट मी देयर शुड बी वर्क गोइंग ऑन, एंड technology can really do that for you. So how do you integrate technology into your startup during scaling up is the big deal for actually, earning money and bringing your product to a scalable market. um, Scalable tech architecture, again, it's very similar. Use of scalable technology, databases, network structure, and even in sales and marketing. So there are a lot of tools in sales and marketing. So for marketing, if you're using social media, there are integrated softwares that can just do your thing by clicking just one button, so trying to use ऐसे सब technology is something that we'll have to think of. We'll have to innovate in our product. See, I don't know what your products are. It can be from like really small scale products to like really big manufacturing scale products as well, or maybe just a service, or maybe just a software also. So I'm just trying to say that how do you integrate technology is very important when it comes to scaling up. And data driven and making part comes when you actually use technology to bring in the insights to understand, अच्छा अब मैं अगर आज आज मेरी सेल इतनी इतनी हो गई थी, like let's say when I'm in the process of scaling up today, I am at 100 customers. In this span of time I need to get to this. So there is something called as lead generation. So for B2B, B2C, you can also start to lead generate. You can use softwares to be able to do that. Start learning about that on your own. When you do that now, just before scaling up, just before understanding all of that, nobody can fool you, because of course you're going to need people for that. You're going to need your team for that, or you might need an external company for that. But you as a founder, you have to know what exactly lead generation means, और what exactly needs to be done. So आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, और आपको ये सारी चीजें पता करना बहुत जरूरी है. सो नाउ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का एक और मतलब होता है, जब एक कस्टमर रिटेंशन की बात होती है कि मुझे अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है. नाउ दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट डू, राइट? एंड अभी क्या होता है, जस्ट बिफोर स्केलिंग अप यू हैव 100 कस्टमर्स. सो आप बहुत इजीली अपने कस्टमर्स, जो आपके 100 कस्टमर्स हैं, उनसे फीडबैक्स ले सकते हैं. सो स्टार्ट टॉकिंग टू देम. इंटरेक्शन इज द बेस्ट थिंग. अगर आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर वो आंसर करें वेरी पोलाइटली, नॉट लाइक कि उनको तंग करना, बट just very politely asking what can be done better in our product, get feedbacks. So I feel I'm talking more about the part where scaling up is just starting. I'm trying to tell you that you need investment, yes, but the main part is doing this part, where you do multiple things. You try to understand your product more and more, go back to the whiteboard again, start writing ki kya better ho sakta hai, again, look at the competitors, look at the market, then think of scaling up, then think of knowing, अच्छा this is how I'm going to scale up. ये मेरी टेक्नोलॉजी यूज होगी, ये मार्केटिंग के लिए यूज होगी, ये सेल्स के लिए यूज होगी, या ये मैं ऑपरेशन के टाइम पे यूज करूंगा, या ये मैं ऐसे मैं कस्टमर्स को वापस रिटेन कर सकता हूँ अगर कस्टमर्स लूज हो रहे हैं. तो आपको एनालिटिक्स देखनी पड़ेगी. अगर अगर कोई अगर आपके पास फिर भी 100 कस्टमर्स में से 50% लोगों ने बोल दिया कि आई थिंक मैं वापस से आपका प्रोडक्ट नहीं लूंगा,
या अगर मैं आपका प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या रीजन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढो एंड उस पे आप और बेटर करते जाओ. So हाँ, so I think that's the role of technology in scaling up a startup. If there are any questions, please ask. Let's go to the next slide. Yes, Simran, I think this is very important to understand that the definition of a startup itself says that a idea or innovation product that have scalability, right? Yeah, And startups को ये समझना जरूरी है, without technology you cannot reach to a certain level of scalability, right? totally, And totally. बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक लिंक्डइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल आपको कराता है. नाउ वी हैव मल्टीपल टूल्स, जनरेटिव एआई के टूल्स हैं जिसकी हेल्प से Chat आप GPT. पर्टिकुलर स्केलेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट द पॉइंट दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. सो मैंने काफी सारे लिंक्डइन के टूल्स देखे हैं जो आपको एग्जैक्ट एनालिसिस बता देते हैं कि किस रीजन के कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, आपकी Okay. वेबसाइट पे कितने क्लिक किस रीजन से आ रहे हैं. और वो सारा जो डेटा है वो आपको नेक्स्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं. So this is how we use the technology or different tools to plan our strategy for scaling up. Yeah. Right, Simran? That's right. Yeah. Also because ये बहुत ही B2B, मतलब मेरा startup is more into B2B. So when it comes to B2B, आजकल अभी recently we've started using data for B2B. वरना ये B2C के लिए जैसे फैशन ब्रांड्स हो गए, जो ब्यूटी ब्रांड्स हो गए, उनके लिए आजकल ये जो है क्लिक बेट वाला सिस्टम दैट्स मोर वर्किंग. So B2B के लिए I'm still learning how do I use data driven technology for being able to do that. Yes. Benefits of scaling a startup: increased revenue. um, again, मतलब पैसे तो हमें कमाने ही है, एंड स्केलिंग enables that for you. अगर आप स्केलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो you can think of, okay, so when I started Go for Chai, we were at a point where we were just in Nagpur, where we were selling chai to small hospitals, very very small ऐसे कुछ कुछ offices. And that was very initial stage where we thought अब मतलब हमारा क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो पक्का वैलिडेट हो चुका है. our product is ready, we are ready to supply to more customers. How do we do that? We started going to larger markets. What are larger markets? For us it was airport. For us it was different corporates with like 10,000 employees in the company. So how do you do that is by going out there in the market, sending your sales team, like teaching them how to actually talk, get the sales done, having a sales funnel actually. like अगर हम इस महीने इतना सेल्स कर रहे हैं, अगले महीने हम कितना कर सकते हैं. So that's how you actually think about scaling a startup, because that's also a strategy, that's part of it. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपका हायर रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको पता ही नहीं चलेंगे. एयरपोर्ट से फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, आईनॉक्स में हम कैसे कर सकते हैं, आईनॉक्स में हम पैन इंडिया जा सकते हैं. सो थिंकिंग अबाउट बिगर मार्केट्स. सो for for a B2B startup like that and B2C as well, it is very very important that you think about India as a whole. So right now, if you're into Ayurveda products, or like I don't know which kind of products there are. If there's a SaaS startup also, which is totally focusing on small businesses. So your market is actually whole world, because anyone sitting in Africa can be like, okay, I want to use this software. How do I buy it? So you need to be present on internet. You need to reach them. So for that, lead generation comes in, and whatever he mentioned just now is very very important. These kind of tools where you try to implement, and that's how you increase your revenue. Better talent acquisition. Of course, when you're growing, you actually attract top talent, because they would be like, oh my god, what's this startup jo itna acha kar raha hai, who is out there trying to scale up. ये जो trying to scale up वाला part होता है ना, this is more attractive, because
Lot of youngsters, lot of people who really are genuinely wanting to learn, wanting to grow, they go into these startups. They go into startups where founders and team members are trying to achieve something bigger. The goal is higher and you can see it properly. You can literally visualize it. अच्छा ये startup बहुत मेहनत कर रहा है. I want to get into that startup, and that's how you attract good people. So expanded product portfolio, this allows to actually understand कि ये भी हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, हम कुछ और भी कर सकते हैं. जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कानेगी का ही मतलब मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी. इसमें हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट इज जस्ट राइट नाउ फॉर कॉर्पोरेट्स. बट मैंने ये सोचा कि यार हर सोसाइटी में, एक अच्छे लग्जरी रेजिडेंशियल सोसाइटी में, देयर इज अ जिम, देयर इज योगा या स्विमिंग पूल, सब कुछ है. बट मेडिटेशन के लिए तो कुछ नहीं है. सो नाउ आई हैव क्रिएटेड अ मार्केट, अनदर मार्केट, एक अलग प्रोडक्ट सेगमेंट जो वहां पे भी फिट इन हो रहा है. सो मुझे, मैं जब स्केलिंग अप कर रही हूँ, मुझे ये पता चला कि रियल एस्टेट में भी मेरा प्रोडक्ट जा सकता है. So that's how you think, and that's how you understand, okay, you can get revenue here also. There's a new market opening, there's a new infrastructure development happening, या एक और नया छोटा सा मार्केट भले ही जो भी है वो खुल रहा है. एंड यू सी द अपॉर्चुनिटी एंड यू ग्रैब इट बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन टू थिंक अबाउट इट. रियल एस्टेट वालों ने तो अब तक सोचा नहीं है कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ. एंड बिकॉज मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल बहुत सोच रहे हैं लोग. सो फॉर देम इट्स लाइक इट कुड बी समथिंग दैट ओके, it's new and let me try it out. So that's where your product can fit in, and that's how we are also trying to thinking of scaling up. So yeah, next slide please. Challenges of scaling a startup: resource allocation. um, Resources मतलब क्या होता है? Resources मतलब पैसे, resources मतलब आपके टीम मेंबर्स, एंड रिसोर्सेज मतलब जो भी आपके लेट्स से जो टेक्नोलॉजी है, या कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर है, लेट्स से कोई जैसे जूम कॉल का ही सब्सक्रिप्शन है, दैट्स आल्सो रिसोर्स. सो हाउ डू यू अलोकेट ऑल ऑफ दिस? ये जो चैलेंजेस है, ये तब आते हैं जब आप एक्चुअली बहुत बड़ी टीम को संभाल रहे हैं, एंड आपको बहुत बहुत सारे कस्टमर्स को केटर करना है. सो एज आई सेड, द स्टेज इज वेयर हमारे 100 बहुत अच्छे कस्टमर्स बैठे हुए हैं. So now how are we going to scale up? So this is when resource allocation becomes very very difficult. ये बहुत challenging होता है क्योंकि हमको लगता है कि अब हम पैसे कहाँ कहाँ डालें. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होता ही है, या लेट्स से जो रिकरिंग कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी कॉस्ट होता है, सोशल मीडिया कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट, दीज आर काइंड ऑफ कॉस्ट. सो हियर्स वेयर you find it a big challenge. But how to solve this challenge is, come back to the whiteboard. Whenever I feel कुछ गलत हो रहा है, even in life or even in anything, come back to your paper, come back to your whiteboard, think of where and what is important, mark that in red. ये सबसे important है, ये priority है, इस पे आप focus करो, इस पे आपको पैसे लगाना है, and then you do other things. So that's how resource allocation can be done. This is very very important to understand. ये इंडियंस में बहुत अच्छा है बाय द वे, एंड स्पेशली हाउसवाइफ्स में, स्पेशली लेडीज में ये बहुत बहुत अच्छा होता है बिकॉज दे हैंडल द हाउस. सो दे नो, वो हर महीना रिसोर्स एलोकेशन करते हैं. सो आई थिंक दे वॉन्ट फेस अ चैलेंज इन दिस. सो अगर आपकी वाइफ है, आप उनसे हेल्प लीजिए इस चीज में. I would really suggest that, because or your mother, because she'll be the perfect one to help you with resource allocation. Market saturation. Expanding to saturated markets requires innovation and differentiation to stand out. Now, what are saturated markets? Markets where मतलब बहुत कुछ ऑलरेडी है, सैचुरेटेड हो गया है, वो उसके पास इतनी सारी चीजें हैं कि अब उसको एक और चीज नहीं चाहिए. दे डोंट वांट अनदर वन थिंग, दैट अनदर प्रोडक्ट और अनदर थिंग दैट कम्स इन. बट इन केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना शुरू कर दो कि ऐसा कुछ क्वर्की प्रोडक्ट बनाओ कि मतलब the other person or that market is actually very impressed by your product. So honestly speaking, in chai,
चाय बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, राइट? उसमें कुछ फैंसी हम नहीं कर सकते। बट वो टाइम पे ऐसा हो रहा था कि सब लोग टपरी पे जाके चाय पी रहे थे, या सब लोग अनहाइजीनिक चाय पी रहे थे, जैसे भी जो भी दे रहा था, जो भी मेस वाले लोग दे रहे थे या जो भी है। बट हमारा प्रोडक्ट में ऐसा डिफरेंशिएशन था कि हमने बस उसके कप्स चेंज कर दिए, हमने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, और हमने बस उसको फैंसी बना दिया। एंड दैट्स व्हेन एवरीवन वाज गेटिंग इनटू, ओ नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट हाइजीन, नाउ वी हैव टू बी, that kind of phase. So that's where that's how you innovate, and that's how you differentiate to stand out. We opened a small cart, हमने एक ऑन व्हील्स कार में, सॉरी लाइक अ ट्रक, उसमें हम लोगों ने चाय बेची जब कोई उस पे चाय नहीं बेच रहा था. So that's an innovation. So that's how you try to expand and try to get into these kind of markets where it is very difficult to get into. Cultural shift. um, अब हर टाइम, एवरी सीजन, एवरीथिंग चेंजेस. Right now it's October, November, December, there's Diwali, there's larger customer base for a lot of things. People are going to buy gifts more, people are going to buy clothes more. So there's a lot of demand in that case, but they're not going to focus on lot of other things. They're not going to focus on maybe their health, because अभी वो मिठाई ज्यादा खाने वाले हैं, अभी वो बहुत सारी चीजें ज्यादा करने वाले हैं, but that will happen दिसंबर के बाद. Probably January, February is when everyone's like, oh, मुझे जिम जाना है, ओ मुझे ये करना है. सो यूल हैव टू थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि अच्छा अभी कल्चरली क्या चेंज हो रहा है मार्केट में, सीजन वाइज क्या चेंज हो रहा है, वेदर के हिसाब से आपकी सिटी में क्या चेंज हो रहा है. सो दीज आर थिंग्स विच आर ऑल्सो अ चैलेंज विच वी समहाउ मिस आउट ऑन, बिकॉज हमको लगता है हम समहाउ ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट में. यू नो हमारा कस्टमर कब क्या करना चाहता है उसको पता करना बहुत जरूरी. इसलिए माय होल पॉइंट ऑलवेज हैज बीन कि हम टारगेट ऑडियंस के बारे में पूरा पूरा पढ़ ले. हम एक पूरा प्रॉपर एक पर्सन बनाए हमारे टारगेट ऑडियंस के बारे में. इट्स कॉल्ड पर्सोना, अ कस्टमर पर्सोना. यू हैव टू कीप बिल्डिंग दैट कस्टमर पर्सोना अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स. आप हमेशा आप उसके बारे में अलग अलग चीजें भी लिख सकते हैं. जैसे मेरा कस्टमर पर्सोना क्या है, सो आई राइट अबाउट कस्टमर पर्सोना एज a girl, let's say, who is 29 to 30 years old, who is working at Twitter, who is a software engineer, who likes to do yoga, who knows how to meditate and wanting to learn to meditate. She reads books, and she has traveled to many countries. That's when she's going to use my product. If not, she wouldn't be. And she understands technology. So these are this is basically my persona. So I want to just give an example to you guys that this is how you need to bring out आपका कस्टमर क्या करना चाहता है. छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, खाना क्या पसंद है उसको. It's like that, so that your product can be related to that and आप better उनको sell कर पाएंगे. So yeah, anything that you want to say, Ankit? Yeah, like marketplace like India Yeah, have huge impact on this cultural shift. और हमने totally. देखा है कि काफी सारे स्टार्टअप्स एक पर्टिकुलर मंथ में स्केलिंग अप में एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, एंड दे Exactly. हैव a huge need of customer. So this is Yeah, also a very important parameter. उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कि आपको किस मंथ में, लेट्स से वैलेंटाइन डे आ रहा है, वी नो दैट गिफ्टिंग होगा बहुत सारा, वहां पे ऑनलाइन डिमांड्स आएंगी, तो उस पर्टिकुलर मंथ में आप अपनी स्केलिंग अप की स्ट्रेटजी, स्केलिंग अप का जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं. यस, yeah, नाउ वी totally. कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट. Technology, I mean, again, technology is so important that it's coming again and again. Scalable infrastructure क्या होता है? जब अब आप स्केलिंग अप के उसमें पहुंच चुके हैं कि अब मुझे स्केल अप करना है, एंड यू हैव स्टार्टेड टू यू नो गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो. आप स्केल अप कर रहे हैं इन दैट प्रोसेस. सो यूल ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि आपका जब डिमांड इंक्रीज होगा तो आपका प्रोडक्शन कैसे मतलब कर पाएंगे आप. So that's something that you'll have to think of. You'll have to have strong, very, very extremely strong operations.
सो आपके सर्वर्स अगर आप मतलब सॉफ्टवेयर में है, या अगर आप इवन इफ यूर इन सॉफ्टवेयर, तो वो हैंग नहीं होना चाहिए सडनली। कस्टमर इज यूजिंग, मे बी टेस्टिंग हो रहा है एंड सडनली इट्स नॉट वर्किंग. So that's not how it should be done. So that should be perfect, and I kept on telling the same thing again and again, that your product needs to be perfect. You should be strong enough to go there and say that I can cater to 100,000, 20,000 people right now. So that's scaling up infrastructure. Data security, very very important. Your customers are going to give their data to you, so protection of that sensitive data is very important. These days people are very sensitive about their data. मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहती हूँ इंटरनेट पे. आई एम वेरी मच नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट. आई डू नॉट वांट टू गिव माय फोन नंबर टू एनीवन. दैट्स द काइंड ऑफ दिमाग में ऐसे बैठ गया है, मुझे अपना डेटा नहीं देना है किसी को भी. Because there are so many leakages happening, there's so much happening out there, that you just don't want to put your family or yourself at risk. So for customers it's very very important, trust hona, that this brand or this company is not going to do that. एक होता है कि फाउंडर को देख के लोग पैसा डाल देते हैं या खरीद लेते हैं कोई चीज या कर लेते हैं. But I mean that's there, but as a brand you need to have a brand stability, a brand trust. आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी है कि आपका आपका ही मतलब अगर इंस्टाग्राम कहीं लॉग आउट हो जा रहा है या कहीं इंस्टाग्राम कोई हैक कर ले रहा है या आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, दैट्स रॉन्ग. दैट शुडंट हैपन. दैट्स अ नो नो फॉर स्टार्टअप, बिल्कुल भी नहीं. सो फिगर दैट आउट फर्स्ट, कीप योर पासवर्ड्स इन प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगेन अगेन बोल रही हूँ. एक और चीज होती है इन डेटा सिक्योरिटी जो थोड़ी सी अलग है. आई वुड लाइक टू मेंशन दिस. There was a company, I won't name the company, but they had named the company with similar lines to a bigger company, very big company, like a giant company. तो दैट कंपनी, उन्होंने केस फाइल कर दी इनके ऊपर. रातों रात इन लोगों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जीरो हो गए. उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट का पता नहीं क्या किया, हैक कर लिया. बिकॉज दे वर यूजिंग द सेम नेम, दे वर नॉट यूज लाइक, एंड दे हैड सो मेनी फॉलोअर्स. So try and keep your names also different and unique. Don't make it similar to other big giants, because you are not them, and they can sue you very easily. We are still very very small. We are trying to build a name. Build your own brand, yeah? Build your own kind of company. Don't copy anything from anyone. You can take inspiration, but you can't directly copy. That's also I would like to just emphasize on. कस्टमर एक्सपीरियंस, इसमें ऐसे होता है कि एवरी स्टेज में वेन एवर यू आर स्केलिंग अप, या अगर आप स्टार्टिंग में भी हो, आस्क योर कस्टमर्स. उससे आपको उनको कैसे फील करवाना है वो भी पता चल जाएगा. I want my customers to feel that they are at peace. How do I do that? It's such a difficult thing, because वो कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले, वो जब तक अंदर से नहीं आता वो उनको पीस फील होगा ही नहीं. So I'm trying to make the product in such a way that उनको वो optimum advantage मिल जाए कि अच्छा मैं ऐसे फील कर सकती हूँ. वो एटलीस्ट इतना फील कर लेना कि मैं कर सकती हूँ. That's enough for me, and I have achieved my customer potential. So I think you have to focus on um, these very very minute things. Market expansion, you have to again conduct a market research. I think I've mentioned all of this earlier. Product adaptation, adapt your product to meet the needs of the new market. क्योंकि अगर आप प्राइसिंग मॉडल कंसिडर नहीं कर रहे, आप लैंग्वेज कल्चर प्रेफरेंसेस नहीं कंसिडर कर रहे, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा मार्केट में स्केल करने के लिए. क्योंकि आप बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स को टैप करने वाले हो एक साथ, आप एक मार्केट को नहीं करने वाले हो टैप सिर्फ. तो थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट. पार्टनरिंग विद लोकल बिजनेसेस. अब ऐसा हो जाता है कि वी थिंक वी आर इन आवर ओन शेल. वी थिंक अच्छा हम तो बहुत अभी तो हम बहुत स्केल अप करने वाले हैं, हम बहुत बड़ा करने वाले हैं बिजनेस. So why do we need small people? No, that's not the thing. Whenever you're getting into smaller cities, whenever you're getting into different cities, talk to their, the big giants, talk to their people to understand what they are doing. And then maybe collaborate with them, try to do things with them. तो वैसे आपका scale up better होगा. Scaling production or services.
Automation, I think this is very similar to what I've mentioned. So I'm just gonna skip this one. So hiring and team building, yeah, this is important. This is a very important part, where you think about how do you trust a team. A trusted team is a team which you need for scaling up. Expertise जिनकी बहुत अच्छी है, who is always wanting to learn, and who has a culture fit. They understand your product well, they understand you well. That's also important. They believe in you, and that's when you probably build a team. And for that, your brand needs to have culture. एक विजन होना चाहिए कंपनी का, कुछ वैल्यूज होने चाहिए, कि मतलब कुछ भी, कोई भी टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं, वो आपके वैल्यूज है, वो आपसे बहुत पर्सनलाइज्ड है, वो आप किसी और की कॉपी नहीं कर सकते हैं. So yeah, that's about hiring and team building. Next slide, please. Case studies. So there are a lot of them, but these three are very commonly talked about. Uber has disrupted the transportation industry definitely. उन्होंने जिस तरीके से स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज दे के जो कूपन वाला सिस्टम यूज किया था, दैट रियली हेल्प्ड उबर टू गेट मोर क्लाइंट्स. सो दे यूज टू गिव फ्री कूपन्स अ लॉट, फर्स्ट 5 rides free. So that's how they scaled up. For Airbnb, they also did a very similar thing. They used to give referral coupons, and they connected the host and made the experiences better for them. So जैसे होस्ट को ऐसे बोल के कि आप मतलब आप अपने, अगर कस्टमर्स का आप अगर एक्सपीरियंस आप बेटर कर रहे हैं, तो हम आपको हमारे पॉकेट से और कुछ देंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो they went towards the host rather than the customers. सो दैट्स हाउ एयरबीएनबी ने स्केल अप किया. उन्होंने घर ढूंढे पहले, उन्होंने लोग नहीं ढूंढे, उन्होंने घर ढूंढे पहले. सो आई थिंक दैट बिकॉज दैट्स द कॉन्सेप्ट, राइट? दे फाइंड हाउसेस एंड देन द हाउसेस गेट रेंटेड आउट फॉर फ्यू डेज. स्पॉटिफाई, अगेन स्पॉटिफाई पर्सनलाइजेशन पे बहुत बहुत बड़ा उन्होंने ध्यान दिया. राइट नाउ इफ यू प्ले एनी म्यूजिक, उसके रिलेटेड वाले म्यूजिक आपको सुनने मिलेंगे, एंड दैट्स समथिंग दैट is a strong point for them, because no other music streaming platform used to do this. So that has disrupted the music industry, and I think that's a very good part. You can also listen to music together. This was in beta. I don't know if they have launched yet, but when I was in London, they were launching that part. So that's how they did it very beautifully. Their launch was amazing. So yeah, that's it about the case studies. Do's and don'ts of scaling up. आप अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखो. यू कंटिन्यूसली मॉनिटर कि एग्जैक्टली आपको कहाँ स्केल अप करना है, और आपका कितना प्रोग्रेस हो चुका है, आपके कितने कस्टमर्स हो चुके हैं, कितने कस्टमर्स जा रहे हैं थिंकिंग दैट दे डोंट लाइक इट, व्हाई दे डोंट लाइक इट, आस्क देम. बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, टॉक टू योर टीम, टेल देम दैट हमारे ये चैलेंजेस है. इफ यू डोंट टॉक टू योर टीम, वो एक बॉन्ड नहीं रह जाएगा, एंड दे विल ऑल्सो नॉट गिव यू बैक. यू नो they'll also not give you inputs. So talk to everyone, get everyone's inputs, because सिर्फ एक अकेले फाउंडर से कुछ नहीं होने वाला. you'll have to talk to your team, because they are building your company. आप सिर्फ एक आइडिया हो, वो लोग आपका टीम बिल्ड, आपका कंपनी बिल्ड कर रहे हैं एक्चुअल में. एंड डोंट्स बिकम्स, अगर आप सोच लेते हो कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट जल्दी लेना है क्योंकि मुझे स्केल अप करना है, बट आपका प्रोडक्ट बराबर रेडी नहीं है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल लॉट ऑफ कस्टमर्स, सो देन दैट्स अ वेस्ट, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट. एंड आपके कस्टमर फीडबैक को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. So just don't do all of that. And again, last point that I would like to mention, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज मत लीजिए. इन्वेस्टर को फालतू में अपने कंपनी में लाके कोई फायदा नहीं होने वाला है. जितना आप अपने पास रख सकते हो अपने पूरे शेयर्स, वो उतना आपके लिए बेटर होगा. अगर आप मेंटरशिप और गाइडेंस चाहते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स लाइक दिस वन, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. और अगर आप किसी कंसल्टेंट को भी ऑनबोर्ड करना चाहते हैं जो एक बहुत एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज दैट वे यू आर स्पेंडिंग जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यू आर नॉट गिविंग अप योर शेयर्स. सो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट. आई थिंक that's it from my end. Yes. So I just want to add a few more points in this don't, because काफी सारे स्टार्टअप्स को लगता है कि हम विद इन 3 मंथ और विद इन 6 मंथ
बहुत सारे कस्टमर तक रीच कर पाए, एंड वंस दे गॉट द कस्टमर बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिमांड, और दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, फिर उनको नेगेटिव फीडबैक आता है। और वंस यू गॉट द नेगेटिव फीडबैक, वो जो आपकी नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी होती है, तो आपका ग्राफ सडनली नीचे गिरने लगता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू स्टैब्लिश योरसेल्फ, फर्स्ट यू मेक कोर टीम, और जब आप एक प्रॉपर टेस्ट कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को वैलिडेट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट यू स्लोली स्लोली एक्सपैंड योर कैपेबिलिटी, एंड उसके बाद फिर आप धीरे धीरे स्केल अप करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट में एज अ समराइज वी कैन टेक इट, सिमरन। या तो आई थिंक कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी सॉलिड। आप हर चीज़ में आप टेक्नोलॉजी अगर नॉट इन टर्म्स ऑफ कि जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू यूज़ इट वैसे नहीं, बट फॉर डूइंग समथिंग दैट इज़ मोर क्रेडिबल यू नीड टेक्नोलॉजी। आप ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं, एसओपी सेटअप कर सकते हैं, ट्राई टू डू दैट। कम्युनिकेशंस एनहांस कर सकते हैं। स्केलिंग अप के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, हमने इस बारे में बात किया है। इंक्रीज रेवेन्यू है, इम्प्रूव टैलेंट है, एंड एक्सपेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। बट स्केलिंग के भी बहुत चैलेंजेस हैं, तो आप प्लीज जब आप रेडी हो तभी मार्केट में जाना। मैं एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहती हूँ विच आई प्रोबेबली हैव फॉरगॉटन टू टेल, that when I started out last year, just after starting out in 6 months, I conceived. So I had to like stop my work. बट आई डेंट रियली स्टॉप। मैं अपने प्रोडक्ट को बेटर करती गई। मैंने मैन्युफैक्चर अच्छे ढूंढे, एंड इनफैक्ट हमने खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना टेक्स टाइम। तो हमने खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया उस बहाने। And right now, my baby is 4 months old, and now I'm actually ready for the market, and now I'm thinking of scaling up because I didn't want to get in the market when I was not ready for it, you know. My product was not ready. So I feel like this decision is very important कि आप तब तक कोई भी चीज नहीं करना। अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो रहा है, just don't do it for the sake of it. Take it slow. इट्स ओके। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है। तो ट्राई टू जस्ट टेक थिंग्स स्लोली, एंड इट्स ओके। स्टार्टअप्स को टाइम लगता है। उबर एक दिन में बड़ा नहीं बना, एयरबीएनबी एक दिन में बड़ा नहीं बना। उनका आइडिया भले ही बन गया था बहुत जल्दी, बट उनका स्केलिंग को बहुत टाइम लगा। सो वेन एवर यूर स्केलिंग अप, please consider data security parts, customer experience parts, and scalable infrastructures आपके पास solid है या नहीं। So yeah, all the best guys, and I think you guys will do well. And any doubts, please reach out to me on LinkedIn. I'll be very very happy to help you guys out. Yes. So yeah, already we covered majority part of today's session, right? Yeah, And yeah, every startup wants to scale up and fulfill the need of customer and particular problem of society. And while you plan for a scale up, please consider these all points shared by the Simran. So once again, thank you very much, Simran, on behalf thank of Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. Thank you thank very you much for today's session. thank you. My pleasure.